बताओ सब ठीक ठाक है? क्या क्या किया? Have done yesterday, day before yesterday? Are you doing sunset TV work which I have assigned to you? Do it now or never. Do it. The day will not return back. Acha, are you engaged in also GS where you are doing? Are you doing self? Bajiram, you must have classes. ठीक है, उसके बाद करना है, वहां पर भी IR पढ़ाएंगे आपको. बट सेल्फ स्टडी हुआ होगा ना तो वो काम आएगा. यू ऑल्सो डूइंग कहाँ पर? विजन, कोई बात नहीं, कहीं पर भी कर रहे हो. बी रेगुलर, बी कमिटेड योर वर्क. दैट इज टू थिंग्स एंड हैव अ लिटिल कॉन्फिडेंस. या ठीक है. अभी शुरू किया है तो रखो कि तुम्हें 15 महीने लगेंगे तैयारी करने में टोटल. डोंट बी सो हरी इन दिस एग्जामिनेशन. एंजॉय द प्रोसेस. यू नो, रिजल्ट इज आउटकम. नहीं, if you enjoy the process, your preparation, result, don't worry about the result. Enjoy the process. If you enjoy thoroughly your process, result, UPSC will not disappoint you. ठीक है, तो काम करते रहना है. वहां से लिखते रहना है. और संसद टीवी को हमेशा यूज करिए उसको. ठीक है, उसके उसके जैसे उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं. एक प्रोग्राम्स है बिल एंड अमेंडमेंट्स. एक अमेंडमेंट्स करके है, तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट को लेकर के चर्चा है. देयर इज वन प्रोग्राम कॉल डिफेंडर तो नहीं, पर्सपेक्टिव. राइट, बहुत सारे जो प्रोग्राम आते रहते हैं उसका डिस्कशन होता रहता है. राइट, सो वॉच इट रेगुलरली. फाइन. Should we proceed with the class? Yeah, tell me what we have done in the last class. हमने क्या किया? We defined politics, right? We defined politics. Okay, what have you written in the last? Negotiation. Right, who says politics is all about negotiation? कौन कहता है ऐसा? It is February 28, right? Board is visible to you? Yeah. Now, if you look at the feminist understanding of politics, or before feminist, let's talk about Marxist. You know, Marxist. How Marx defines politics. Now, if you look at Marx defines politics in terms of class struggle. Marx defined politics in terms of class struggle. For Marx, history is nothing but history is history of class struggle. Right? For Marx, all written history is the history of class struggle. Right? Right? Right. Struggle. Yeah. Between whom? Between master and slave. Right?
or plebeian and patrician, plebeian and patrician. These were the class in France. Master and slave was class in the ancient Greek, right? Between feudal lord and serf. This was a Europe in the class, lord and serf. And in the current time and in capitalism, it is a struggle between the bourgeoisie and the proletariat. That is Marx, right? It's all about class struggle. Politics is nothing but a class struggle, right? Between two classes, right? The entire history is all about that. The history of politics. It is history of class struggle. है ना? अभी बुर्जुआजी किसको बोलते हैं? नहीं, बुर्जुआजी बोलते हैं मालिक को, सिंपल ऑनर, who owns the means of production. Right? For example, there is a hospital. Like any hospital you talk about, Apollo is nearby you. Apollo Hospital. Have you seen? Apollo Hospital कहाँ पे है? 10 कदम यहाँ से आगे. Now the owner of the Apollo Hospital is a bourgeoisie, and all doctors who are working on the wages may be on the hourly basis, or the weekly basis, or the monthly basis, or the yearly basis package. अब तो पैकेज चलता है, पैकेज चलता है, पता है ना? इंजीनियर्स को भी पैकेज मिलते हैं. पैकेज मतलब होता है कि सैलरी कितना है साल का, दैट इज कॉल्ड पैकेज. 16 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, ऐसे पैकेज होता है. All are comes under proletariat, who gets wages or salary, right? In all private sector, सब प्रोलेटारिएट में जो वेज, जिसको वेज मिलता है, वेज मतलब समझ में आता है, दिहाड़ी हिंदी में बोलते हैं, राइट? सब प्रोलेटारिएट में आएंगे. और बुर्जुआजी कौन होगा? जो उसका ऑनर होगा, पूरा बेनिफिट उसके पास जाएगा, राइट? So that is actually Marx's understanding of politics. Now if you talk about feminist, understanding politics. We are talking about what is politics. Look at the different definition that different scholars have, or different, perspective on politics. Now look at, do you know feminists? Who are the feminists? Feminist always talks about equality between man and woman. Now if you look at, in feminists have given one statement called personal is political. This is a famous statement given by feminists, especially radical feminists had given. This is radical feminist understanding. Radical feminist calls personal is political. Now what is personal? What is political? Until now, we define politics, that is, any activity happening in the public sphere, right? And personal and is something called family.
What is family? Family is something called personal or private affair. Family is called private affair. What is political? The collective activity. In public sphere. Right? Now, if you look at the politics has been defined that it is an activity in public sphere, whether it is a power, whether it is a struggle of class or whatever. And if you look at family had been outside of the arena of politics, always. Look at Aristotle, who said that family should be kept aside, right? In family, there is a natural hierarchy between husband and wife, right? And family should be excluded from politics. Not this Aristotle, many scholars, later on Hobbes, later on John Rawls, many scholars talked about personal is personal and a state should actually regulate only this. What a state regulating? A state is regulating the public sphere and left out the family. Right? Family did not, a state did not touch family. Now, why state actually intervened in public sphere? Because if you look at, there was anything that was happened in public sphere, for example, lawmaking that was happening in public sphere, or injustice was happening in public sphere, or power was operating in public sphere, right? And that's why the state was regulating the behavior of people at the public sphere. That is politics now. The state was actually regulating the behavior of individual or the groups at public sphere. So there is a dichotomy between public and private. Now feminists, if you look at radical feminists in 1960s, 1950s, 60s, they rejected this dichotomy. They rejected this dichotomy. Dichotomy means the public and private dichotomy. The state should, regulate only the public sphere, either individual or group or the market, whatever. The state should not touch the family. Now, radical feminists challenged the idea and advocated that, look, if you are talking about inequality, then family is the origin of inequality, where man and woman are not equal, right? Where power relations occurred, where power relations occurred, where injustice happens within family. And this injustice actually replicates at public sphere. If someone is not respecting women in their family, they cannot respect women outside of the family, right? Because for them, woman is inferior. Women cannot understand things, right? Politics is a little complex, and women cannot understand, right? So radical feminists argue that family is a root cause of inequality, and family is something where power operates, right? Power operates. Who operates power? The husband. Over whom? The wife, right? Look at the decision making within the family. Who takes the decision often? Husband takes the decision often, right? Now look at the economic inequality between man and woman. It is structured in family. And what we look in family, which is inequality, that replicates in the public sphere. Why women representation is less in public sphere? Because women did not get freedom in family, right? And is not able to go out of the family to participate, right? So family is a root cause. And therefore, if you look at a state is actually engaging into the
public sphere to regulate the behavior of individual or the group or the any society, or right. A state should also regulate human behavior within the family. Am I making sense? Right? So personal is not something personal. Personal is also political. Right? A state should intervene into the family. Right? A state should make law regarding family, and we have seen several law. For example, Hindu Marriage Act is a law which regulates family. Before Hindu Marriage Act, right, there was a polygamy. Right? Now look at the Domestic Violence Act 2005. It is a state intervention in the family. Man is not allowed, right, to do domestic violence. Making sense? समझ में आ रहा है? So for them, personal is political. समझ में? लिखिए 2-4 लाइन. Right? Radical feminist argues that personal is political. Radical feminist argues that personal is political. Radical feminist argues that personal is political. Earlier, political philosophers from Aristotle to John Rawls have you heard about John Rawls? From Aristotle to John Rawls advocates that man is the head of the family. Man is the head of the family. Head of the family. And politics is something which occurs at public sphere. And politics is something which occurs at public sphere. Which occurs at public sphere. The state should regulate behavior of individual or group a state should regulate behavior of individual or group in the public sphere or group. State should regulate behavior of individual or group in public sphere, SPHERE, or arena लिख सकते हो, public arena, because it is a public sphere wherein WHERE और IN उसी में लगा देना, उसी के अंदर IN लगाना, अलग से मत, wherein, right, it is a older word, हाँ, अब नहीं लिखते हैं, but लिखिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, wherein inequality, injustice, where in inequality, injustice, disorder, instability, and power manipulation. And power manipulation occurs.
family is something private affair. Family is something private affair, or family is a private affair. Family is a private affair in which a state should not intervene. In which state should not intervene. Then change the paragraph and write. Okay. Radical feminist of 1950s and 1960s. Radical feminist of 1950s and 1960s rejected radical feminist of 1950s and 1960s rejected public private dichotomy. Radical feminists rejected public private dichotomy and argued that family is the root cause of inequality and injustice. Family is the root cause of inequality and injustice. Family is the root cause of inequality and injustice. Full stop. Within family, comma, power operates between man and woman. Power operates between man and woman. Right? This full stop. These inequalities, injustice, and power operation. These inequalities, injustice, and power operation these inequalities, injustice, and power operation replicate और reflects, कुछ भी लिख सकते हो आप, replicates लिख सकते हो या reflects at public sphere, therefore family should be egalitarian first. Therefore family should be egalitarian first. Therefore family should be egalitarian. Egalitarian मतलब equal. Yeah, based on equality. Family should be egalitarian first. समझ में आ रहा है? And the state should intervene into family, and the state should intervene into family to make it more egalitarian and just. Therefore, the state should intervene into family to make it more egalitarian and just. Right? For instance, yeah, love. Now wait 1 minute. Due to radical feminist intervention, the state has framed several laws
Due to radical feminist intervention, state has made several law like Domestic Violence Act, Child Marriage Act, Hindu Marriage Act, Triple Talaq Act. Are you understanding or not? Yeah. Triple Talaq Act, any law you can put. Triple Talaq Act, any law that comes to your mind that state has made intervention in order to bring equality between man and woman within the family. Any law that comes to your mind? Abortion Act, Beti Bachao, Beti Padhao schemes. Yeah, you can write Beti Bachao, Beti Padhao schemes. And so on. And so on. समझ में आया? Feminist understanding of politics. ठीक है, उनके लिए पर्सनल जो है ना, पर्सनल कुछ नहीं है. मान लीजिए कोई झगड़ा हो रहा होता है वाइफ और हस्बैंड में, तीसरा जाता नहीं है. जाता क्यों नहीं है? अरे पर्सनल मैटर है, वी शुड नॉट इंटरवीन. अगर आप इंटरवेंशन करने जाओगे तो बोलेगा आप मत कुछ बोलना, ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं आज इसको कूटूंगा. हैव यू सीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड? हस्बैंड पी के आता है और उसको कूटता है, राइट? कोई आता है तो बोलता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम जाओ यहां से, मैं आज इसको सबक सिखाऊंगा. आई विल टीच अ लेसन to this girl, right? She should not have, manner to talk to her husband. Of course, woman, when you come to your home and if you are not, ordered, you are drunk and you are not, of course, woman will respond to you. Nahi? Right? Hota hai na? But this is not personal. यही समझाना है मुझे. This is not personal. Personal is something जब चीजें आराम से हो रही है, उनके बीच में बातें हो रही है, उनके बीच में कुछ अफेयर चल रहा है, हंस रहे हैं, दैट इज पर्सनल. जब वो वायलेंस पे आ जाते हैं ना, इट्स नॉट पर्सनल. इट इज नॉट पर्सनल. इट हैज बिकम पॉलिटिकल. सोशल से पॉलिटिकल होना बहुत एक टाइम है. फॉर एग्जांपल, मार्केट में, करोल बाग मार्केट है बगल में, यू गो टू द करोल बाग मार्केट और बहुत सारे आवाज आती रहती है, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे many buzzwords are coming from the market. That is not political. That is a social, right? Urban society, is like that. मार्केट में आवाज होगा ही होगा. नहीं होता है, लोग बातें करते हैं, लोग खरीदारी करते हैं, बट कंसीडर नेगोशिएशन होता है, इतने में दोगे, इतने में नहीं दोगे, होता है ना? बोलता है 60 में दूंगा, बोले आप 30 में दे दो, नहीं 50 में ले लो मैडम, राइट? But consider this negotiation turn into violence, then it has become political, right? A murmur or buzz in the market, when it turns to violence, it becomes political, right? तब तक वो social रहता है. Family is a social institution. It is a tested institution, right? There is a love between husband and wife. There is a sacrifice between husband and wife. Wife does sacrifice for husband and vice versa, right? Both do sacrifice for children, right? And it is a social institution. But consider one family where every times there is a violence. Even single violence becomes political, right? It legitimizes your neighbor to intervene. राइट? कि आप पीट नहीं सकते, राइट? होता है ना? What idea? Political का understanding. Now, if you look at politics, is also beyond boundaries. Politics is not something happening in one country, one state. Politics is also
something beyond boundaries, like war. War is always political, or peace agreement. It is also political, right? Then, if you look at the interaction between among states, that is a political. What we study in international relation, that is a politics beyond boundary we studies. नहीं, within state में जो हो रहा है वो तो हम इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, राइट? आईआर में हम क्या पढ़ते हैं? Politics among nations. What is international relation? It is a politics among nations, that is international relation. Nahin? Right? So, write one more politics beyond boundaries. Politics beyond boundaries. Politics is not something which occurs within a state. Politics is not something which occurs within a state. समझ में आ रहा है ना? You can write in your own language, right? Understanding is very, very important in your part of study. है ना? बहुत आराम से अच्छी बातों में, छोटी सी बातों में बात कह जाना है एग्जाम पेपर में. बड़े बड़े जार्गन्स नहीं यूज करने हैं. ऑल्दो जार्गन्स का जो लेयर है वो सेकेंड लेयर में बताया जाता है. कुछ चीजें, कुछ वर्ड आपको ध्यान रखना है जो यूज करना है टू इम्प्रेस द इवैल्यूएटर. अदरवाइज सिंपल लैंग्वेज बताना है. क्या लिखा? Politics is not something which occurs within the boundary or within a state, right? It is something which occurs among nations. It is something which occurs among nations too. It is something which occurs among nations too, right? International relation is politics among nations. International relation is politics among nations. There are several global issues. Like war, peace, poverty, inequality, human trafficking, terrorism. There are several issues. War, peace, environment, कुछ भी लिखो ना. इंटरनेशनल इश्यूज में सोचो इस पे. war, peace, environment, poverty, inequality, terrorism, nuclear proliferation, human trafficking, trade and commerce, migrations, on which nation state interacts. On which there are n number of issues. भाई तो मैंने 2 4 5 10 लिखवाया आपको. On which nation state interacts among each other. समझ में? ह्यूमन राइट्स लिख लिया था. ह्यूमन राइट्स इज अ बर्निंग इशू. लिखा था ह्यूमन राइट. मैंने एक बार बोला था ह्यूमन राइट लिखा. तो ह्यूमन राइट्स इज, उसी में कहीं ह्यूमन राइट्स घुसा दो.
human rights, terrorism, war, peace, huh? Development. These all are the burning issues at international politics. नहीं है ना? So this is politics is something about. So look at definition of politics. Right? अभी तक बहुत बोला. इसके बाद और भी है. Right? So, unending definition. You go on, keep going on definition. Right? But हमें क्या करना है? जब आप पूछे तो 5-7 एंगल बता देना है. बिकॉज डेफिनेशन आपका जो बताना है, आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, लिमिटेड पेपर होगा, बट आपको ये सब एंगल बताना है. राइट? फ्यू एंगल आई हैव गिवन यू इन डिटेल, बट आपको थोड़ा शॉर्ट करना है, उसको प्रिसाइज करना है. ठीक है? वो आपको आंसर राइटिंग में सीखना है कि कैसे प्रिसीजन करना है. स्टडी में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है, डेप्थ पढ़ना है. राइट? देयर आर टू वेज ऑफ रीडिंग, यू नो. एक तो आपका वाइडनिंग कितना है और एक आपका डीपनिंग कितना है नॉलेज का. ये दोनों चीज मैटर करता है. होता है ना? एक कहते हैं कि नॉलेज, ज्ञान में गहराई, राइट, और एक ज्ञान का चौड़ाई कितना है. राइट? उसका आयाम कितना बड़ा आप दे रहे हैं. समझ में आया? ये दोनों चीज आपको दिमाग में रखना है. ठीक है? So we have defined politics. I hope you got to understand politics. Now, the next word which I'll talk about, that is thought. How we can define thought? ये तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल वेस्टर्न बताया, वेस्टर्न समझ में आया, पॉलिटिकल समझ में आया. थॉट का क्या मतलब है? Yeah. Ideas of a person, ideas or concepts of a person or an areas of an areas. अब बहुत लोग उस एरिया से आएंगे तो उसका थॉट उसी तरह होगा, है ना? राइट? जैसे हम कहते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. राइट? तो उस एरिया से वो थॉट आपको बहुत कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी, है ना? अब कोई मान लो उड़ीसा से आता है, उसका एक अंडरस्टैंडिंग है ना? अब कोई नेपाल से आता है, उसका अलग अंडरस्टैंडिंग है. सो थॉट इज आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ पर्सन भी हो सकता है. राइट? इफ यू फोकस मोर, बट एरिया का भी एक थॉट होता है. समझ में आया? So that is the thought. Now let me talk about, have you heard about theory? सुना है थियरी के बारे में? थियरी का क्या मतलब है? फिर पॉलिटिकल थियरी लगा देंगे उसमें. हाँ, व्हाट इज थियरी? 9th-10th में बहुत सारी थियरी पढ़ते हैं. मैनलेव थियरी, न्यूटन्स थियरी पढ़ते ना? राइट? व्हाट इज थियरी? Study on any area. That is called investigation. Right? What is theory? That is thought. We have done theory on politics. A systematic and organized knowledge of any phenomena. Like for example, what is political? What is political? We have done very systematic and organized idea कि अच्छा evolution कहाँ से हुआ, पॉलिस से हुआ, अंडरस्टैंडिंग इनिशियली किसका कैसा था, बाद में कैसा हुआ, मैकियावेली ने क्या कहा, इसने क्या कहा, मार्क्स ने क्या कहा, फेमिनिस्ट ने क्या कहा, अच्छा इंटरनेशनल एरिना पे क्या है. राइट? सो हमने जो पॉलिटिक्स को डिफाइन किया, इट इज थ्योरी. राइट? व्हाट इज थ्योरी? अ सिस्टमैटिक and organized knowledge of any phenomena. That is theory. Right? What is theory? A systematic and organized knowledge of
any phenomena, right? Now phenomena का मतलब क्या है? What is phenomena? जब हम phenomena कहते हैं, ये प्लूरल है, पता है? phenomena. सिंगुलर क्या होता है phenomena का? Phenomenon, yeah, you're right. Phenomenon is a singular word, right? When we use phenomena, what is phenomena? Yeah. So phenomenon क्या होता है? What is phenomena? A systematic and organized knowledge में तो दिक्कत नहीं है. Systematic मतलब होता है, very much coherent. From शुरू से लेके लास्ट तक आपको बता देना है, right? What is phenomena? Any event can be called phenomena. Right now, this pencil is this is phenomena. Now it dropped. Now why it dropped? Now you have to analyze what Newton did. Newton did why certain things fall down. Nahi, right? And then he talked about the law of gravity, law of motion, है ना? Right? So any event can be called phenomena. Knowledge of any phenomena, any event. Phenomena मतलब event. कुछ भी event हो सकता है. For example, there can be natural phenomena. Natural phenomenon or natural phenomena. Now, what is natural phenomena? जो natural होता है, right? जैसे solar eclipse हो गया, या star, the pattern of star, all are natural phenomena. बारिश हो जाता है, तो बारिश क्यों होता है ना? Right? अब ट्री है, ट्री कैसे ग्रो करता है, राइट? या इंसान है, इंसान कैसे ग्रो करता है? All are natural phenomena, right? Not intervened by man, right? For example, कुछ भी मान लो कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो क्यों खड़े? क्यों खड़े? क्या साइंटिफिक रीजन क्या है? हाँ, ग्रेविटी नहीं. ग्रेविटी इज नॉट राइट आंसर. फ्रिक्शन. We are standing here because of the friction. अगर फ्रिक्शन ना हो तो सारे लोग स्लिप करके उधर उधर चले जाए, right? It is a friction which helps us to move and walk. All natural phenomena. Similarly, there are social phenomena. नहीं, there are social phenomena. अच्छा, social phenomena मतलब क्या है? सोसाइटी में जो भी होता है, anything that occurs in society, like marriage, is a social phenomena. हाँ, नहीं. Interaction among the caste is a social phenomena. नहीं, family is a social phenomena, right? A violence within the family is a social phenomena, right? Now, from the social phenomena, something occurs called political phenomena. Political phenomenon, right? What is political phenomenon? Anything related to the political. Anything related to political. अब political क्या है? आपको बता दिया है. समझ में आया? Like for example, कुछ भी, जैसे कि for example, a state is a political institution, political party, right? Political parties. For example, Marx was a political man. नहीं, justice is a political phenomenon. Rights is a political phenomenon. है ना? कुछ भी बोल दो political phenomena क्या है? कुछ भी related to political. Right? Environmental crisis is a political phenomena. Right? Environment was not considered as a political phenomenon till 1950-60s. Now, it is after 1950-60 it was recognized that there is an environmental crisis. We need to cooperate on environment, right? We need to protect environment.
right? And it has become a political issue, isn't it? Now countries are meeting every year, COP, Conference of Parties, 28th, Saudi Arabia. समझ में आ रहा है? तो फेनोमेनन समझ में आया? अब उसी का सिस्टमैटिक नॉलेज जो है ना, उसी को हम थ्योरी कहते हैं। उसी का जो सिस्टमैटिक नॉलेज है उसी को हम थ्योरी कहते हैं, राइट? मान लो कि जस्टिस, अब जस्टिस पे हम थ्योरी कैसे करेंगे? जस्टिस पे हम थ्योरी कैसे करेंगे? अब आपको बताना पड़ेगा जस्ट का क्या मतलब है, पहले कौन आया, कौन बोल गया जस्टिस के ऊपर, उसके बाद कौन बोला, उसके बाद कौन बोला, उसके बाद कौन बोला, 20th सेंचुरी में किसने बोला, 21st सेंचुरी में किसने बोला, आज क्या है आइडिया, समझ में आया? तो जितना हम करते हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी होता है। कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी किताब का उठा लीजिए, वहां पर एक ही चैप्टर होता है थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, जस्टिस, और जस्टिस पे ही वो इतना मोटा नहीं 30-35 पेज लिख डालते हैं। What idea? समझ में आया? Right? So it is a systematic and organized knowledge of any phenomena and its reflection, or what and its reflection or representation. जब हम इसको कर रहे होते तब थ्योरी कर रहे होते हैं। अभी कुछ दिन हम पहले पॉलिटिक्स को थ्योराइज कर रहे थे, समझ में आ रहा है? राइट? सो theory means a systematic and organized knowledge of any phenomena and its reflection or representation. राइट? अब कुछ फेनोमेना हो रहा था, जैसे मैंगो वाज फॉलिंग डाउन, नाउ न्यूटन सॉ इट। हमने वही पढ़ा है ना कि न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देखा, हाँ, उसके दिमाग में आया क्यों गिर रहा है, राइट? देन ही एनालाइज्ड, he organized the knowledge, and then he written certain thing. Okay, if certain things fell down, then these are the region, this is the law of motion he had given, right? First law, second law, third law. Similarly वो सोशल साइंस में भी ऐसा ही है, सोशल साइंस में भी ऐसा है, समझ में आया? Okay, so if we add political to our theory, तो पॉलिटिकल थ्योरी का डेफिनेशन क्या होगा? A systematic and organized knowledge of any political phenomena. यहां पर पॉलिटिकल फेनोमेना जोड़ देंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी हो जाएगी, राइट? एंड इट्स रिफ्लेक्शन और रिप्रेजेंटेशन। आपको बताना भी पड़ेगा ना, देखो दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर बात बोलोगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो नॉलेज है, अगर मैं श्वेता को बोलूं कि भाई अपना नॉलेज रिप्रेजेंट करो, राइट? श्वेता क्या करेगी? दो तरीके से कर सकती है। एक तो कुछ बोलेगी नहीं, चुप रहेगी, मुंह से ही ऐसे ऐसे कर लेगी, राइट? शब्द नहीं बोलेगी। या ये क्या करेगी? कोई पिक्चर ड्रॉ कर देगी, सर आप समझ लो, मैं नहीं बोल सकती, राइट? सो इफ यू लुक एट, शी इज नॉट यूजिंग द वर्ड, इट इज कॉल्ड वर्ड इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? वर्ड इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल पेंटिंग, राइट? और स्केचिंग, और ड्रामा और म्यूट ड्रामा है ना, कुछ करेगी। हैव यू सीन ड्रामा जहां पर कुछ नहीं बोला जाता है, और यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? बट दूसरा है वो लिख देगी, शी विल राइट, कॉल्ड वर्ड डिपेंडेंट, राइट? व्हाट इज वर्ड डिपेंडेंट? लाइक आर्टिकल,
poem, right, stories, books. दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज होता है, राइट। तो एक तो वर्ड इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा होता है वर्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन। दो तरह से नॉलेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो वर्ड इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन होता है और एक होता है वर्ड डिपेंडेंट, जैसे आर्टिकल लिख दिया, पोएम, स्टोरीज, बुक्स, राइट। Have you noted down? Yeah, done. Okay. Now you see, can it be called theory, word independent representation? And word dependent, which one can be called theory? What about this? Is it not theory? Systematically cannot be organized. Sketching is a one sketch, right? Right? If you look at a scholar, there are a scholar whose name is Rajiv Bhargava. सुना है राजीव भार्गवा का नाम? कौन है ये? हाँ, इनकी किताब है पॉलिटिकल थ्योरी, राजीव भार्गवा and Ashok Acharya. Very good book on political theory, very good book, and he's a good scholar. And his argument is that theory is only the word dependent reflection, right? What is theory? Theory is word dependent reflection of knowledge. That is theory. According to whom? The Rajiv Bhargava, the scholar Rajiv Bhargava. Right? So you can write, according to Rajiv Bhargava, theory is a word dependent reflection of knowledge. Theory is a word dependent reflection of knowledge. Done? You are learning something, right? सुना था ये बात, आती थी ये सब? नहीं, ये सब नहीं आती थी? अच्छे समझ रहे हो ना? Very good. So we have talked about political theory. अच्छा, political theory अगर पूछा जाएगा तो आप डिफाइन कर देंगे, राइट? कि एनी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक, बेसिक डेफिनेशन वही होगा. A systematic and organized knowledge of any political phenomena can be called political theory. कोई पूछेगा natural theory क्या है? A systematic and organized knowledge of any natural phenomena, that is called natural theory. Right? अच्छा, religious theory क्या है? A systematic and organized knowledge of any religious phenomena, that is called religious theory. That is also called theology. That is also called theology. I'm not theologist, right? I'm a student of political theory, right? I'm not a theorist. ठीक है? Right? So समझ में आया? Sorry? Theology, yeah. Theology, वो बताएगा बारिश कब होगा, आपकी शादी कब होगी, right? There are many, religious scriptures which actually do some lots of things. आपका भाग्य दिखा के बता देंगे, अच्छा तुम्हारा भाग्य तेज है, you will get this, you will get that in that year, that year. How do you know? Because of this. समझ में आया? समझ में? Okay.
Astrology is different. Astrology is a science. Astrology is a science, right? And there are certain facts. They are organized, right? So they will tell you about through the certain facts, right? Astrology is different, right? Astronomy is different. Some data, some facts. Theoretical, the religious scriptures are not the evidence. But in theology, religious scriptures are the basis. उसी के बेसिस पे होता है. रिलीजियस स्क्रिप्चर जो है दैट इज ग्राउंड फॉर एनालाइजिंग द योर कैरेक्टर. सकता है ये, मैं कहां बोल रहा हूं डेटा नहीं है. दैट इज क्वालिटेटिव डेटा, right? But there is a difference between astronomy and theology, right? Theology had been proved false several times, right? Theological, something बहुत लोग 2004 में मतलब ये किए थे कि वाजपेयी जी आ जाएंगे, राइट? आप देखेंगे कभी कभी मैच हुआ था, क्रिकेट मैच इंडिया वर्ल्ड कप का, लोग हवन कर रहे हैं, लोग यज्ञ कर रहे हैं, इंडिया जीतेगा, ये इट्स रबिश थिंग. एस्ट्रोलॉजी कभी ऐसा नहीं करेगा, बट थियोलॉजिस्ट ऐसा कर सकता है. चलो गॉड को खुश करते हैं, राइट? और हमें कुछ मिल जाएगा. एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं करेगा कभी. कभी कभी नकली एस्ट्रोलॉजर भी होता है, वो भी आपको बता देगा दे आर नकली असली, राइट? वो भी बता देगा नहीं ग्रह इधर है, इधर है, इधर है, और भारत जीतेगी. वो कहते हैं कि इसको थ्योरी नहीं. Other scholars does not talk about. He's the only man he's talking about. He's actually, dividing this representation of knowledge into these two areas. Rajya Bhargava, right? Yeah, he's the only man who's talking about this, right? What the idea? Cave hai. But that is written in a book, na? That is represented through a box. अब मान लो कि आप म्यूट ड्रामा करो, आप उसको सिस्टमैटिकली के ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे करोगे बताओ? So you have to write in word, then you are theorizing. But if you are not, मान लो मैंने म्यूट ड्रामा कर दिया, फिर दूसरी जगह म्यूट ड्रामा, उसका रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना. If you are recording, then you are theorizing. If you are putting by the word, then it is fine. If you are documenting it, it's theory. If you are not documenting, अब डॉक्यूमेंटिंग कर रहे हो तो आपको वर्ड में आना पड़ेगा. You cannot be word independent and cannot call it systematic knowledge, right? आपको उसके बारे में थियरी या कुछ पोएम, कुछ आर्टिकल, कुछ किताबें लिखनी पड़ेगी, चाहे वो पेंटिंग हो, स्केचिंग हो, ड्रामा हो. जब आपने वर्ड यूज कर दिया तो थियरी हो जाएगी. समझ में आया? बट आप जो कह रहे हैं, मैं थोड़ा और लगाता हूं कि मान लीजिए कि कोई पेंटिंग है, अगर आप किसी म्यूजियम में चले जाइए और पेंटिंग है शुरू से लेकर के बिल्कुल आज तक का पेंटिंग एक सीरीज में रखा हुआ है, कैन इट बी कॉल्ड थियरी? मैंने क्या कहा? कंडीशन है यहां पर, देयर आर कंडीशन. मान लीजिए कि वी हैव गॉन टू म्यूजियम एंड a very initial painting is there, but मान लो वर्ड नहीं है यहाँ पर, कुछ लिखा नहीं है, but there is a painting, and then series of painting have been put there till the present, right? About any development, that will be called theory.
इट्स ऑलवेज कंटेस्टेड, राइट राइट, ठीक है, हमेशा कंटेस्टेड, कंटेस्टेड मतलब डिसएग्रीमेंट है, फाइन। तो ही कॉल्ड वर्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज इज थियरी। समझ में आया? चलो अब एक दूसरा वर्ड को एक्सप्लोर करते हैं, फिलॉसफी। आपने सुना होगा, बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है। क्या मतलब होता है फिलॉसफी? कोई बोले फिलॉसफी, मैं फिलॉसफी पढ़ रहा हूं और मैं पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ रहे, बोले ठीक है पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते रहे हो, सब ठीक है, बट ये बताओ कि पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब क्या है भाई? फिलॉसफी का मतलब बता दो पहले, पॉलिटिकल तो बाद में ऐड होगा। नहीं नहीं, मर्जीत कभी सोचा है? नहीं? पहले नहीं सोचा है? ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको, हाँ जी। अच्छा देखो, ये दो वर्ड से बना है, एक होता है well, इसका मतलब होता है लव, राइट, और दूसरा वर्ड आया है सोफी, सोफी सोफिया से आया है, या दो वर्ड है, राइट, फिल और सोफिया, सोफी से वर्ड आया है, इसका मतलब होता है विजडम। एटिकल फिलॉसफी, राइट, yes sir. Fine. Now if you talk about Aristotle philosophy, oh ये यहां तक नहीं है, ओके। When you talk about Aristotle philosophy, you are talking about Aristotle's wisdom. When we talk about Aristotle philosophy, then we'll talk about Aristotle's wisdom. Yeah. Right? It is Aristotle's wisdom. Right? When you talk about Gandhi's philosophy, Gandhi's philosophy, then it is a Gandhi's wisdom. It is a Gandhi's wisdom. राइट, हम एक दूसरे को तो अरे फिलॉसफी मत बोलो यार, फिलॉसफी मत बको, यहां पर जाओ, यहां से कॉमन कहते हैं, हम यूज करते हैं, राइट। अब अपना यहाँ जो ज्ञान है यहाँ मत रखो, हम बोलते हैं ना एक दूसरे को, अपना ज्ञान रहने दे बाबा, ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़ यहाँ पर, चला जा, राइट। तो हम यूज तो करते हैं, लेकिन उसका लिटरल मीनिंग क्या होता रहता है, राइट, अब वो हम सबकॉन्शियस लेवल पे हमारा होता है, राइट, एक्सप्लिसिटली वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है। So philosophy means love for wisdom. When we talk about Aristotle's political philosophy, we will talk about Aristotle's wisdom और गांधी's wisdom. जब हम बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, बेसिकली हम जो वेस्टर्न पॉलिटिकल विजडम है उसको बात कर रहे होते हैं, राइट। गांधी फिलॉसफी तो गांधी के विजडम के बात कर रहे होते हैं, मार्क्स फिलॉसफी तो मार्क्स की विजडम की बात कर रहे होते हैं कि मार्क्स क्या बात कर रहा है, राइट राइट। जब हम रिलीजियस फिलॉसफी बात करें तो रिलीजन का क्या विजडम है ना, है ना। सो फिलॉसफी मींस विजडम, द लव फॉर विजडम। बोलो बोलो,
सोफिया मतलब विजडम होता है। या जब हम या लव फॉर, उनकी जो ज्ञान थी, उनका जो लव था, उनकी जो ज्ञान थी, उनकी जो मीमांसा थी, हिंदी में मीमांसा बोलते राइट, उनका जो अंतर ज्ञान था, उसको हम गांधीज फिलॉसफी बोलेंगे। जैसे सत्याग्रह was Gandhi's wisdom, right? Why that wisdom? Because he had love, he had certain wisdom. समझ में आया? नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ठीक है, स्वराज। Knowledge and wisdom sometimes equated, right? Sometimes, now if you look at knowledge, wisdom, both are synonymously we use, right? Sometimes we use prudence, right? Now another word is called opinion, right? Now if you look at, we have opinion on everything. For example, opinion about Indian government, or opinion on Modi ji, right? Now what is opinion? It is a first time reflection, right, about any idea, about any person, about any place, that is called opinion. आप गए और बिहार और आपको चोरी हो गई बैग, और आपने बोला यार बिहार तो बहुत गंदा है, right? No, that is opinion. Now what is knowledge, what is wisdom, what is prudence? It is a tested and investigated opinion, right? When you investigate it, right, you test it whether it is correct or not, then that can be called knowledge or wisdom. Got the idea? So there is a difference between opinion or knowledge or wisdom, right? Knowledge, wisdom, prudence, all are synonymously used. Any difference that you think? Wisdom हमेशा inner conscience होता है, right? If someone talking about from inner conscience, from his mind, speaking from his mind, that is called wisdom, right? For example, हम बात करते हैं Gandhi's wisdom, that is Gandhi's philosophy, right? Or Plato's wisdom, right? Or any Veda's wisdom, right? When we call about knowledge, knowledge is something, it is more than that, right? But we use synonymously it. Of course, जब हम knowledge कहते हैं तो knowledge about something, नहीं, right? It is about something. So it is something from outside. It is outsider. What knowledge I have about mobile, right? What knowledge I have about Gandhi? What knowledge I have about UPSC examination? What knowledge I have about car, right? It's something outer. But what I have wisdom. Wisdom means that is coming from inside, right? Got the idea? Knowledge is something coming from outside. Wisdom is something from inside. आपको जो बुद्धि मिलती है, राइट, थोड़ा सा हल्का डिफरेंस होगा. Can say wisdom coming from inside, right? You can be wise or you can be unwise too. Inherent knowledge, yeah. Inherent knowledge is called wisdom, yeah, definitely. Inherent knowledge is called wisdom. But you can get knowledge from outside the world also, from family, from teacher, from peers group, from books, from field experts, from ethnographic research. Got the idea? So inherent knowledge can be called wisdom, right? Inherent knowledge
of any person can be called knowledge. This is, opinion is, it is a reflection. It is a first time reflection. First reflection on any events or areas or person. That is opinion. Opinion may be wrong. Wrong, right? In opinion may be wrong, but knowledge, because knowledge is always tested, right? You can say the deep opinion, right? When tested opinion, investigated opinion is knowledge. Knowledge is always interrogated, always subject to examination, always subject to examination. हमेशा उसका examination होगा, हमेशा उसका interrogation होगा. राइट अगर आप देखेंगे सोक्रेटिस का एक बड़ा ये है स्टेटमेंट है, नॉलेज इज वर्च्यू. Knowledge is virtue. What is virtue? What is virtue? Virtue is excellence. Like knowledge is virtue, honesty is a virtue. Honesty is a virtue. Truthful is a virtue. Truthfulness is a virtue. Righteousness is a virtue. Righteousness is a virtue. Truthfulness is honesty is a virtue. Similarly, knowledge is a virtue. Right? Everyone should acquire it. Everyone should be righteous. Everyone should be honest. Everyone should be truthful. Everyone should be truthful. स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स डिफरेंस होता है. स्कॉलर्स जनरली तो देखो कभी कभी बड़ा थीन डिफरेंस है, वेरी थीन डिफरेंस. फॉर एग्जांपल गांधी वाज आल्सो स्कॉलर एंड गांधी वाज आल्सो फिलोसोफर, और राजीव भार्गवा इज आल्सो थिंकर and he is also philosopher, right? So person can be both. When he is a thinker, then he is thinking on several ideas given by any, and then he applying his own knowledge, right? The philosopher is the who actually explaining his own wisdom on that, right? That wisdom may be on the ground of the practical knowledge he acquired or some extra talent, the virtue he has. Socrates. ठीक है, चलो ये समझ में आया. अब बेसिक पॉलिटिकल फिलॉसफी हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट समझ गए, पॉलिटिकल थ्योरी समझ गए, पॉलिटिकल फिलॉसफी समझ गए, पॉलिटिकल समझ गए. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा थॉट समझ गए, चलो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट समझा देता हूं. Different forms of government. Have you heard about different forms of government?
क्या क्या सुने हो बताओ? डेमोक्रेसी, राइट? Democracy is a form of government. What do you mean by democracy? Rule by the people, huh? Rule by the people, right? Or you can say the rule of majority, right? अभी हम simply इतना कहते, but there are different things. That is democracy, rule of majority, right? Any form, other form of government you have heard about? Republic. What is republic? Where head of the state, a form of government where head of the state is elected. Not anybody तो ठीक है, but not appointed but elected. So elected head of the government, right? A government where head of the state is elected. Any other form of government? Monarchy, yeah, you are right. What is monarchy? Right? A state which is ruled by a family or a person. Ruled by a person or family. Another form of government you have heard about? Autocracy. What is autocracy? Group of. Autocracy means, ruling by their own wishes. Auto मतलब होता है सिम, अपने आप, auto cut, right? Rule by wishes rather than rule by law, customs, traditions, and conventions. Right? So that is also autocracy. Any other form of government you have heard about? कल करेंगे, आज नहीं, मंडे को स्टूडेंट आ जाएंगे अब, हो गया. So more form of government we will discuss on Monday. Next week आपका वो बेसिक हो जाएगा and then we'll begin legal philosophy. Not it done? ऑटोक्रेसी कहते हैं आर्बिट्ररी रूल, जैसे मन हुआ वैसे किया. किम जोंग ऑफ नॉर्थ कोरिया, और क्या बोलता है? हंसो हंसो, रो तो रो. राइट. एक लीडर था हमारे यहाँ पर,
सल्तनत काल में था। ही एक्चुअली सेड हमें शिफ्ट करना है कैपिटल। तुगलक, या यू राइट, मोहम्मद बिन तुगलक, कॉल तुगलकी फरमान। तुगलकी फरमान होता है, वो बोला कि यहां से मुझे शिफ्ट करना है अपना वो कैपिटल, राइट। तो वहां कैपिटल शिफ्ट किया। फिर वहां 2 दिन के बाद बोला नहीं 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 नहीं, दिल्ली सही था, अब चलो तो दिल्ली सब लोग, बहुत लोग मर गए, ठीक है। तो बड़ा गड़बड़ होता है ऑटोक्रेसी, समझ में आया। तो फिर आगे नेक्स्ट डे, और वो काम संसद टीवी वाला आपको अभी कर लेना है।